સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે 31 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ એકતાનગરમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય પરેડ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં યોજાશે। આ વર્ષે પ્રથમવાર મહિલા અધિકારીઓને પ્રાધાન્ય આપીને તમામ સુરક્ષા દળો, આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, એનએસજી, બીએસએફ, એનસીસી તથા રાજ્ય પોલીસની ટુકડીઓનું નેતૃત્વ મહિલાઓ કરશે। પરેડ હવે બસ પાર્કિંગને બદલે કેવડિયાના મુખ્ય માર્ગ પર દિલ્હીની પ્રજાસત્તાક પરેડની તર્જ ઉપર યોજાશે, જેમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સનું लोकार्पण પણ થશે। पहली बार सारी फीमेल कमांडर्स आई हुई है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, 10 राज्यों से आई हुई है, 5 सीएपीएफ के फोर्सेस से आई हुई है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला है और हम आपस में भी घुल मिल गए हैं। तो आज हमारी यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। हम रिहर्सल कर रहे हैं ताकि हम अपना बेस्ट दे सके, पीएम के सामने एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है। स्टैचू देखते ही हमारे में और अलग सी जोश आ गई है। अब हमें लग रहा है कि अब अच्छा करना है हमें। मैडम कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कॉन्टिजेंट को लीड कर रहे हैं, फोर्सेस को लेके आए हैं। वो भी बहुत खुश है, वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही એક મહિનાથી કેવડિયામાં પ્રેક્ટિસ કરી રહેલી અન્ય રાજ્યોની મહિલા અધિકારીઓએ ગુજરાતની મહેમાન નવાજીની પ્રશંસા કરી છે। આસામ કેડરના આઈપીએસ મધુસ્મિતા જણાવે છે કે અહીં આવીને ગર્વ થાય છે। આ નારી શક્તિનો સમય છે। મહારાષ્ટ્રની મહિલા અધિકારીએ જણાવ્યું કે પ્રથમવાર મહિલા કમાન્ડર્સ લીડ કરી રહી છે। પીએમ સામે આ તક અમારા માટે ઐતિહાસિક છે। આ પરેડ નારી શક્તિ અને રાષ્ટ્રીય એકતાનું અનોખું પ્રતીક બનશે। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। हमें इस बार मौका मिला है सब महिला कंटिजेंट को परेड का लीड करने के लिए। पिछले 1 से 1.5 महीने से हम गांधीनगर में प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे आके और ज़्यादा मेहनत कर रहे ताकि परेड अच्छा हो। हमारे जो पंतप्रधान है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सम्मान में हम बहुत अच्छा करें, ये हमारी उम्मीद है। इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम।